Today we are going to start with a question on speed of reaction, and that is again from October-November 2021. It's question number 2, and it states that the student investigate the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. The equation of the reaction is given to you where calcium carbonate is solid, HCl is in the aqueous form, you're getting calcium chloride, which is a soluble salt, you're getting carbon dioxide and water. The state symbol with water we always write down liquid. The student observed bubbles of the gas being produced, right? So observation जो होती है वो is something which is related to your 5 senses. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं before going further with the question. Let's see कि हम यहाँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें हो सकती है. अब कोई गैस निकल रही है तो गैस के हवाले से we can have the observation. So whenever the carbon dioxide is given off, we always observe effervescence. Effervescence means jhag when we have a carbon dioxide, and when we have other gases, like for example if hydrogen is being given off, chlorine is being given off, or oxygen is being given off, then we observe the bubbles, right? These are small bubbles. जब आप पानी boil करते हैं, you observe the bubbles. जब आप uncork करते हैं any soft drink, then you see the effervescence because the carbon dioxide जो कि उसके अंदर dissolved होती है, that's been given out. So these are the two observations whenever the gases are being given off, right? इसके अलावा हम क्या यहाँ पर observation, एक observation तो ये हो गई कि gas is being given off. Now on the basis of which gas? If carbon dioxide, we'll be writing down effervescence scene. If any other gas scene, then we can write down the bubble scene. और कुछ colored gases भी होती हैं, जैसे for example chlorine का color हम लिख सकते हैं greenish yellow color gas, whereas the hydrogen and oxygen, these are basically your colorless gases, so they will be there, you'll be writing this bubble scene. अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? अगर रिएक्टेंट साइड पर आपके पास कोई भी सॉलिड रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट साइड पे कोई भी सॉलिड प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं द सॉलिड disappear, the solid reagent disappear. जो भी solid आप reactant डाल रहे हैं तो वो जो है अगर disappear हो रहा है तो वो भी आप you can take it as an observation. So these are basically the observations. Or if you know that the reaction in terms of temperature भी, ठीक है, जितने भी जब भी आपके displacement reactions होते हैं, they are always exothermic reaction. Your neutralization reaction, they are again exothermic reaction. तो exothermic reactions के लिए हम ये लिख सकते हैं that the flask in which the reaction is being done, that flask turns warm. और endo के लिए जो flask जिसमें जो reaction flask जिसमें आप reaction कर रहे हैं, that turns cold. It feels cold to touch. So these are your basic observations which you normally see while performing the experiment. तो अब let's proceed further. Let's see कि आगे questions में क्या demand किया हुआ है, ठीक है? A student observes the bubbles of the gas, I'm underlining this, being produced when calcium carbonate is added to hydrochloric acid. Now the gas is basically carbon dioxide, right? The student does a test to show that the gas is carbon dioxide. So what test? They're asking you the confirmatory test, the identification test for the carbon dioxide. So we know the test for the carbon dioxide is with lime water. It's with lime water, right? And lime water is nothing but your calcium hydroxide. It's calcium hydroxide. So what you will observe, we will be observing the lime water turns milky. We'll be observing the lime water turns milky. Okay? So that we'll write down, or lime water turns milky white. Okay, so if both the things, test and observation, both correct, you'll be getting 1 mark, right? Now अगर आपको 1 mark की 2 answers लिखने हैं तो CI never give you 0.5 for any half correct mark. अगर आपकी दोनों possibilities, दोनों answer correct होंगे, then you'll be getting 1 mark. अगर इनमें से कोई भी एक answer अगर आपने correct लिखा तो CI आपको 0.5 नहीं देता, उसके अंदर half mark भी अगर correct होगा तो you'll be getting 0. So you'll be getting just 1 mark if both the answers which are there for 1 mark if they are correct. All right, let's proceed with further part.
So A part 2, they're asking state one other observation. So one observation was a gas being liberated and that was carbon dioxide. They're asking you other observation the student make when the calcium carbonate is added to hydrochloric acid. So other observation will be the solid calcium carbonate disappearing because we don't see any solid on the side. So the other observation you can write down here, the solid disappears over here. Okay, so that you can write down. All right, moving further with the question. Now it says that the student does an experiment. Just a minute. A student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the concentration of hydrochloric acid changes. We know that there are certain factors which speed or which changes the reaction. Let's recap those factors. Number one, that's temperature. Number two, that's concentration. Number three, that's catalyst. Number four, that's pressure, and it is only applicable in the case of gases. And number five is your surface area. So here, the factor, the changing factor they're taking is the concentration. That means the rest of the factors, temperature, catalyst, pressure, in the case of gases in the surface area, the remaining factors are constant in order to have a fair test. तो यहाँ पर जो हम factor change कर रहे हैं वो concentration कर रहे हैं, ठीक है? So they're saying that they will be taking a different concentration of hydrochloric acid and they'll be studying the effect of the change of concentration on the rate of this reaction. Now, how are they doing it? They have given you the method in the step-by-step process. Now, you should be knowing these steps properly because यही इसी तरह के questions ये planning question में भी डाल देते हैं. तो this is a learning point for us कि अगर ये question method इस तरह से दे रहे हैं तो अगर कभी ये planning question में आए तो हम भी अपना method को इसी तरह से दे सकते हैं, ठीक है? Now coming ahead, the student, he measures 100 cm cube of 1 molarity hydrochloric acid, which you need to underline, you need to know that the hydrochloric acid is in excess, and pour this into the beaker, right? So he has 100 cm cube of 1 molarity HCl and they're putting it in the beaker, and to this they're adding a known mass. Known mass means a calculated amount of calcium carbonate they're acting. So calculated amount of calcium carbonate is basically your limiting reagent. This limiting reagent is producing the constant amount of basically your carbon dioxide. जो भी आपका जो product है वो depend करता है on the mass of calcium carbonate, the fixed mass of calcium carbonate which you're going to take in all the experiments. Immediately start a clock. You need to observe the timings, change कि कितनी देर में आपका reaction complete होता है. Stop the clock when all the calcium carbonate has reacted. तो यहाँ पे जो observation वो ले रहे हैं वो ये observation ले रहे हैं कि जैसे ही आपका disappearance of calcium carbonate हो रहा है वैसे ही आपको अपना time note करना है. जब आप डाल रहे हैं HCl hydrochloric acid excess में और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वॉच क्लॉक को, और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिसअपीयर होता है आप अपने स्टॉप वॉच को क्लोज करेंगे, ठीक है? और ये जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को आप रिकॉर्ड करेंगे इन योर ऑब्जर्वेशन टेबल. सो दिस इज बेसिकली योर मेथड. द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. अब हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को HCl के चेंज किया है, ठीक है? The concentration of hydrochloric acid for each experiment is changed by changing the volume of 1 molarity HCl. इन्होंने वॉल्यूम को चेंज किया है और उसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम करने के लिए अगर लेट्स सपोज उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने 50 cm क्यूब का किया है. लेट मी शो यू द डेटा टेबल नाउ जहां पे ये लोग ये कर रहे हैं. okay. So they will be making changing the concentration by adding the water to the HCl, and the other variables which are likely to affect the rate are kept constant. That means the temperature is kept constant. They are using the same catalyst, same surface area for calcium carbonate, and if the gases are there, then the same pressure being maintained. So the rest of the factors are being constant because ये सिर्फ एक variable को change करके आपका rate को determine करें कि rate पर उसका क्या impact है. Now they have given you a data table over here. अब इस data table में they have given you the columns जहाँ पर इन्होंने experiment number दिया हुआ है. Then they have taken a volume of HCl. अब ये volume
कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी थी 1 मोलैरिटी, वी आर यूजिंग 1 मोलैरिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर चेंज करें इस कॉलम के अंदर, इन दो कॉलम्स के थ्रू ये यहाँ पे क्या करें, दे आर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब लेट्स सी हाउ। अब यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट 1 में ये 1 मोल पर डीएम क्यूब अगर HCl ले रहे हैं तो उसका इन्होंने 100 cm क्यूब लिया और उसमें वाटर कुछ नहीं ऐड किया, दैट मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपेरिमेंट 1 में यहाँ पर दे आर टेकिंग द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एन HCl, राइट। और उसको उसके अंदर जब हमने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डाला विच वाज माय लिमिटिंग रिएजेंट, तो द रिएक्शन और द कैल्शियम कार्बोनेट इट फिनिश्ड, it disappear in 30 सेकेंड। सही। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर केमिकल, अब दे नीड टू हैव, बिफोर लुकिंग एट द सेकेंड एक्सपेरिमेंट लेट्स सी द थर्ड एक्सपेरिमेंट। in the third experiment they took 60 cm cube of an HCl, to that they added 40 cm cube of water। तो बेसिकली ऊपर इन्होंने 100 cm cube of acid लिया था which was most concentrated, अब इन्होंने 60 लिया उसमें 40 ऐड किया तो इसको डाइल्यूट किया है, लेकिन दोनों की वॉल्यूम जो है वो सेम एज 100 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन्होंने 40 cm क्यूब ऑफ NaCl लिया लेकिन ऐड किया उसमें 60 वाटर, तो उसको मजीद और डाइल्यूट किया है। तो अब ये क्या रहे हैं कि आपका जो वॉल्यूम है of the HCl concentration change करे by adding volume, लेकिन net volume of an acid is same। तो अब एक्सपेरिमेंट 2 में अगर ये 20 वाटर ऐड करें तो यहाँ पर कितना cm क्यूब ऑफ एन एसिड लेंगे, 80 cm क्यूब। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 5 में अगर ये 20 cm क्यूब ऑफ एन एसिड ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज टू बी 80, ठीक है। तो ये आपको टेबल दे आर आस्किंग यू टू कंप्लीट द टेबल, बिकॉज ये टेबल में दे आर जस्ट इंश्योरिंग कि पहले इन्होंने प्योर कॉन्सेंट्रेशन जो भी थी 1 मोलैरिटी थी तो 100 लिया, उसमें कोई पानी नहीं ऐड किया, तो ऑन द टॉप वी हैड द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हियर, राइट। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये डाइल्यूट करते जा रहे हैं अपने एसिड को, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डेफिनेटली वो डाइल्यूट हो रही है, वो लोअर डाउन हो रही है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन लोअर डाउन हो रही है आप देखिए आपका डिसअपियरेंस ऑफ द सॉलिड जो है इट्स टेकिंग मोर टाइम। तो एज यू गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, that's basically slowing down। how we can make it out, because the time taken to of the disappearance of the solid is taking more time, is that clear। तो instead ये दो चीजों से हमें पता चल सकता है रेट, ठीक है। रेट हमें कभी भी इक्वेशन नहीं बताती, इक्वेशन से हमें कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता चलता। रेट ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद वी विल बी आइदर वी कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द डेटा टेबल, या तो हमें डेटा टेबल से पता चलता है रेट, ठीक है। रेट एक अंदाजे से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये रेट है, इस तरह से टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है इन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, या फिर देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, वी कैन प्लॉट द कर्व, हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं, और उस प्लॉटिंग ऑफ द कर्व से वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो स्टीपेस्ट है, तो वी विल गेट टू नो कि कहाँ पर स्पीड जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपको इन्होंने यहाँ पर जो है आपको टेबल फिल करने के लिए दिया है, तो यहाँ पर विल बी यूजिंग 80 cm क्यूब एंड हियर विल बी एडिंग 80 cm क्यूब ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू हैव द सेम वॉल्यूम। और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी लोअर डाउन हो रही है, ठीक है, दैट इज बिकमिंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड। और ये चीज आपको आप किस चीज से ऑब्जर्व करें कि रेट कैसे पता चला है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं रेट जो है वो स्लो हो रहा है, बिकॉज टेकिंग मोर टाइम for the calcium carbonate to completely react with the NaCl। Now over here, then the next part, this is about the evaluation from the table, analysis from the table. Now let's move on to the part to complete the table that we have done. The two missing values, we are having 80 here and 80 here, fine। Now suggest what the student should do to check, okay, sorry, I missed on one part, state which experiment has an anomalous reaction time। Anomalous reaction time means the one which is not following the trend, okay, which is not following the trend। Now if we have a look over here, आपका यहाँ पे कौन सा रिएक्शन फॉलो नहीं कर रहा, अब मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सबसे कम टाइम में खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये टाइम जो है 150 ले रहा है, आपने थोड़ा डाइल्यूट किया, कॉन्सेंट्रेशन को कम किया 1, और उससे कम किया कॉन्सेंट्रेशन तो आपका 120 आया,
फिर 140 आया, फिर 170 आया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा एनामलस रीडिंग है, हमारा ट्रेंड को कौन सा रिजल्ट फॉलो नहीं कर रहा। हमारे ट्रेंड को जो रिजल्ट फॉलो नहीं कर रहा, दैट्स माय एक्सपेरिमेंट 2, क्योंकि यहाँ पर 30 और 120 एक्सपेरिमेंट 2 की जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 30 एंड 120। 30 सेकेंड में आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसकी डायल्यूशन और बढ़ गई थी, सेकेंड से ज्यादा हो गया था डायलूट, तो 120 में हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसका जो रिएक्शन टाइम जो है, दैट शुड बी मोर देन एक्सपेरिमेंट 3। It should be more than experiment 3 and less than experiment 1. So 150 is an anomalous reading, which is wrong, right? जो कि आपका some errors, the experimental error has been done because यहाँ पर जो recorded time है वो that's out of which is not going to give you which will be which is a misfit in the data which has been provided to us, ठीक है। तो ये anomalous reading है, the odd man out. Now state which experiment has the smallest rate of reaction. When you talk about the smallest rate of reaction, then definitely रिएक्शन किसका सबसे स्लो है, ठीक है। तो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का जो आपका रिएक्शन जो है वो स्लोएस्ट है। Again, I left part C to suggest what the student should do to check the reaction time in C. So अगर anomalous reading है तो अगर आप उसको perform दोबारा से करेंगे, if you're going to repeat that experiment carefully, so you'll be getting the right reaction time over here. So what you'll be doing over here, you will be repeating the experiment again with the same concentration. You'll get to know what is the right reaction time. Coming to the part 4, describe how the rate of this reaction changes as the concentration of hydrochloric acid increases. So we can see that as the concentration of hydrochloric acid increases, the rate increases. That means the one with the maximum concentration of hydrochloric acid is the fastest reaction, and the one with the lowest concentration of hydrochloric acid is the slowest reaction. So we can interpret from this that the reaction, the concentration of hydrochloric acid, जैसे से आप increase करेंगे वैसे rate of reaction जो होगा वो increase करेगा, ठीक है। Coming to the last part of the question, that's part D. Over here they are saying that there is no suitable catalyst for the reaction. तो ये हमें पहले से बता रहे हैं कि catalyst वाला जो factor है वो हमारे that factor we are not supposed to consider. Now apart from this catalyst and the concentration which we have already considered in this particular question, suggest two variables other than the concentration and the catalyst, क्योंकि इसको इन्होंने पहले ही से out कर दिया है, or the mass of the calcium carbonate that affects the rate of reaction. दो और फैक्टर्स बताइए जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इसी तरह से चेंज करें, ऑल्टर करें जैसे कॉन्सेंट्रेशन ने किया है। तो वी हैव नंबर 1, आई ऑलरेडी स्टेटेड इन द बिगनिंग, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, surface area, catalyst and the pressure if the gas is involved. So we are left with the two factors, two variables, that is that if we can change the temperature of the while performing the experiment, we can change the rate of reaction, and the number 2 is your surface area or the particle size, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल साइज को चेंज करें, एक एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट साइजेस कर लें, लंप ले लें, कोर्स पाउडर ले लें, फिर फाइनली ग्राउंडेड पाउडर ले लें, तो आपको you'll be getting this different rate of reaction, ठीक है। जितने पार्टिकल साइज जो होगा वो छोटा होगा उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है that is going to be faster. So this was a question which was related to speed of reaction.